Good morning, students. Today we will discuss exercise 6C. Let's see carefully. Sum number 1. Shade the parts in order to compare. Put these signs. We have to shade these parts with help of this fraction and then put these signs, that which is greater, which fraction is greater. Here 2 by 6, it means total parts are 6 and shaded parts are 2 because numerator is 2. So then we will shade two parts of this figure. Here fraction is 3 by 6, it means total part is 6 and numerator 3 are the shaded parts. It means 3 are the shaded parts in this figure. Now we have to find which fraction is greater. We have studied the rule in the last video. If numerator is bigger in the like fractions, then that fraction will be greater. Then numerator is bigger in 3 by 6. It means 3 by 6 is greater. Okay. Same as A part, B part is 3 by 4 and 3 by 8. Total parts are 4 in this figure and total parts are 8 in this figure. And these are unlike fractions because their denominators are different. It means these are unlike fraction. In unlike fractions, we have studied if denominator is higher. If denominator is higher or bigger, then the fraction will be स्मॉलर. अगर डिनोमिनेटर बिगर है तो वो फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉल होगी. तो यहाँ पे फ्रैक्शन स्मॉल कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है. 3 by 8 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉल होगी. ओके. और शेडेड पार्ट कितने हैं इस फ्रैक्शन में, 3. तो 3 पार्ट्स में शेड करेंगे और यहाँ भी 3 पार्ट शेडेड हैं तो 3 पार्ट्स में शेड करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट यस और नो. यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिया गया है कि कौन सी फ्रैक्शन बिगर है और कौन सी स्मॉलर है और हमें क्या बताना है, यस और नो में रिप्लाई देना है. 3 by 5 and 2 by 5, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर. 3 by 5 इज ग्रेटर. इट इज गिवन. इज इट ट्रू? yes, because these are like fractions and in like fractions we have to check the numerator. If numerator is bigger, that fraction will be bigger. Okay. Same as this, these are unlike fractions. Unlike fractions we have to check the denominator. If denominator is bigger, then fraction will be smaller. Denominator बड़ा होगा तो fraction क्या होगी, small होगी. और हमें यहाँ क्या दिया गया है, अपोजिट दिया गया है. जो फ्रैक्शन बड़ी है उसका डिनोमिनेटर तो बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो. ओके. अदर पार्ट्स आर सिमिलर, सो यू विल ट्राई योर सेल्फ. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज साइंस. सेम एज फर्स्ट पार्ट. In unlike fraction, we will check the denominator. If denominator is bigger, then fraction will be smaller. And in like fractions, we have to check the numerator. If numerator is bigger, then that fraction will be bigger. Okay. That in first part, denominators are different. It means it is unlike fraction. Now we have to check which denominator is bigger. 4 by 9 has bigger denominator, it means this fraction will be smaller. Then we will mark this side. Okay. जिसकी तरफ माउथ ओपन होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, बिगर, और जिसकी तरफ क्लोज होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉलर. इज इट क्लियर? सम नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर. सेम एज दीज सम्स वी हैव टू फाइंड. लाइक फ्रैक्शंस आर देयर, इट मीन्स वी हैव टू चेक द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर is bigger in that fraction, then that fraction will be bigger. 5 by 6 has bigger numerator, it means 5 by 6 is greater. Okay. Another part, unlike fractions are given, it means we have to check the denominator. And denominator is bigger, then fraction will be smaller.
डिनोमिनेटर बिगर कहाँ है, 4/9 में, तो ये फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉल होगी. ओके, यहाँ भी सेम करना है. क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर. इन फ्रैक्शन में स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी है. आपको साइन मार्क करने तो आते ही हैं. साइन मार्क करने के साथ साथ आप लिख भी सकते हो कि ये फ्रैक्शन स्मॉलर है. ओके, जैसे कि 8/13 और 8/11 है. 8/13 और 8/11. It means these fractions are given and these are unlike fractions. So we have to check the denominator. If denominator is bigger, then fraction will be smaller. It means 8/13 is smaller. Now we can also write this that 8/13 is smaller fraction. Okay, and in sum number 4 we can also write this 1/6 or 5/6. Sum number 4 a part 1/6 or 5/6. Here which fraction is greater, 5/6 is greater, so we can write this 5/6 is greater than 1/6. Okay, in sum number 6 fill in the blanks. Here all fractions are unlike fractions. Okay, and we have to find that which fraction is greater. Here no numerator is same and no denominator is same. Then how will we do this? We will do cross multiply. Okay, 5/6 and 4/5. We have studied about cross multiply in the last video. 5 5s are numerator by denominator and denominator by numerator. It means 6 multiply 4. n1 d1 n2 d2. n1 को d2 से मल्टीप्लाई, d1 को n2 से मल्टीप्लाई. 5 5 से 25, 6 4s are 24. Okay, now you have to tell which number is greater. 25 is greater. It means first fraction will be 5/6. Then 5/6 will be greater fraction. Okay, same as this e part 9/11 and 5/6. We will do cross multiply. n1 d2 d1 n2. n1 d2 को मल्टीप्लाई करना है और d1 को n2 से मल्टीप्लाई करना है. देन 9 × 6. और हम सीरीज में ही मल्टीप्लाई करते हैं. पहले फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिखा जाता है और नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर राइट करते हैं. देन 9 6 एंड 11 5 9 6 54, 11 5 55. Here 55 is greater. It is on second position. It means second fraction will be 5/6. 5/6 is greater than 9/11. और आपको इस तरह से गिवन है तो आप ये सीरीज ही रख सकते हो. 9/11 एंड 5/6 गिवन था तो ग्रेटर कौन सा है, सेकंड वाला. तो सेकंड वाले की तरफ माउथ ओपन. आप ऐसे राइट मत करो, कंफ्यूजन ना हो आपको. जैसे आपको गिवन है उसी के अंदर मार्क शो कर दो. ओके, सम नंबर 7 is which of the given fraction is greater, 3/5 or 7/5. Same as sixth part we will do. Okay, we will do cross multiply in this sum also. 3/5 or 7/9. It means 3/5 and 7/9. Cross multiply. 3 multiplied by 9 and 5 multiplied by 7. 3 9s are 27, 5 7s are 35. Now which number is greater? 35 is greater. It is on second position. Then second fraction is 7/9. Then mark will be open on the side of second fraction. Okay, it means 7/9 is greater. This is our answer. In cross multiplying we will do multiply of numerator of first fraction with denominator of second fraction.
In second step, denominator of first fraction and numerator of second fraction. Clear? n1 multiply d2 and d1 multiply n2. ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है. क्लियर? In the next video we will discuss exercise 6D. I will send you tomorrow. Till then, thank you and have a nice day. And also we will leave sum number 8 and 9 because these are unlike fractions and we don't know how to take LCM. And in these sums we need LCM. So we will leave sum number 8 and 9. Okay? And only sum number 4, 5 and 7 you will do in your fair notebook. 4, 5 and 7 in fair notebook and 1, 2, 3 and 6 do in your book only. Okay.